A very warm welcome to Assertive Ayurveda family. Myself, Dr. Rashmi Gupta, MD third year scholar, Department of Rasast and Bhasaji Kalpana, Faculty of Ayurveda from Banaras Hindu University. I hope you are all well and looking forward to another episode to clarify your queries and update your knowledge. In continuation of the interview series at Assertive Ayurveda, I came here with queries about establishing an Ayurvedic pharmacy. As we all know, Ayurveda has a blooming market, not for now, but also in future. Many Ayurveda practitioners also wish to open their own pharmacy, but lack guidance on how to do so. So, why not talk about the well developed Ayurvedic pharmacy and its establishment? I'm immensely thankful to you, sir, for including my queries on this topic on your amazing interview series. So, sir, we are proceeding with the questions. Namaste. What are the basic qualification one should have to own a pharmacy, sir? Fine. When Dr. Rasmi, you are raising the question, what is the basic qualification to establish an Ayurvedic pharmacy? So it has two categories of answer. One is the legal answer and another is the practical answer. But before answering this particular question, I would like to make all viewers of the Ajati Ayurveda familiar. That is today on the 18th August, on the day of recording of your interview, and it will be telecast on the 20th August by 11 a.m. on Sunday. Friends, here is the Gujarat Declaration. And WHO Global Summit is going on 17th and 18th, today full day. And here is the question that WHO DG and the Union Health Minister and the Secretary Ministry of Ayush, everyone is talking about the promotion of the traditional medicine. And WHO DG said that more than 170 countries are practicing traditional medicine in this form or that form. But every country should take lesson from India, because here is the integrative approach, and at one place, allopathy and the Ayurveda or the TM of Indian continent is available. So this is the day, and this is the time, this is the period which is promising for traditional medicines. Yes. And we have to cope up the demand of the globe. And globe demand from us, not only the Ayurvedic medicines, but the quality, safe and efficacious Ayurvedic medicines. If you go to the data available, more than 9,000 Ayurvedic pharmacies are registered. I mean total Ayush. Out of those, 8,000 are belonging to the Ayurveda. So just a question is coming in my mind, that whether so much players are in the market, so whether there is a need of a new pharmacy instead, or the players who are existing already in the market, they have to make themselves more better and appropriate to produce the quality, safe and efficacious Ayurvedic medicines. See, if this is the scenario, then I would put a point here. Here is the number of the Ayurvedic pharmacies which are just showing the number. But in the true sense, the Ayurvedic pharmacies which may develop or which may cope up the global demand are very few. And here is always a scope. If a PG students of Rasas, Bhasaji Kalpana, Dravigun are coming into the field of manufacturing of Ayurvedic medicines.
And it is not limited to the PG scholars of the Rasashastra and the Dravigun. Anyone can start an Ayurvedic pharmacy, any PG scholar, any PhD, if he is having interest in so. Now, what is the legal position here? The legal position is here that to open the license, we are going to have a license to open Ayurvedic pharmacy. We are going through the in our series of the every Monday rule the regulation by 6 p.m. and we have completed the act, and now we are going on the drug rule, and the drug rule 1945 is under our discussion, and we have discussed up to the rule 154, and we are supposed to discuss in couple of weeks next about the rule 157. If you see the criteria there, so here is a need of only, I said you ki there is a need, one answer is the legal and another answer is practical. The legal answer is here that only a BMS qualification is sufficient to open a Ayurvedic pharmacy, right? Okay. Then there is the need of one technical staff, that is the BSc or the B Pharma Ayurveda. So these two qualifications are there in the the required to have a license, that one fellow having a BAMS degree and another one having a B Pharma Ayurveda or the BSc with experience which is desired there. So here legally only these two qualifications are required. Rest is the swanta sukha, अपनी प्रसन्नता के लिए. मौलिक सिद्धांत का भी पीजी फार्मेसी खोल सकता है, बीएमएस तो है ही है. क्या चिकित्सा का भी पीजी खोल सकता है, बीएमएस तो है ही है. शल्य वाला चाहता है कि 4 सूत्र खुद बनाएगा और खुद के दवाइयों का स्टैंडर्ड करेगा, खोल सकता है, बीएमएस तो है ही है. और रसशास्त्र भेषज कल्पना और द्रव्य गुण का तो डोमेन ही है, और इन लोगों को तो जरूरी है आना चाहिए फील्ड में. तो आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि प्रैक्टिकलिटी एनीवन इज हैविंग a BMS qualification may open an Ayurvedic pharmacy. Okay, sir. And legally it is only the BMS and the B Pharm or the BSc. Yes, please. Okay, sir. My second question is, what are the minimum basic needs to establish the pharmacy? Again, the same view. You said minimum, and I am talking about the maximum. I do hope for a maximum to cover the global demand, but from minimum, a journey of the maximum happens. One cannot start with the maximum. A new entrepreneur or a new startup, that is not possible. So you have to start with the minimum. Yes, sir. And then you study the market situation. The minimum criteria is given into the Schedule T of the Drug Rule 1945, and you have to fulfill all those conditions to get the GMP license. There is a space of the there are certain provisions in the GMP and quoted into the Schedule T, and one can come up with an Ayurvedic pharmacy. Land is required 1200 square feet, and the drug testing laboratory, and then some certification are needed there from the Pollution Control Board or from the Department of Labor, because these three are the just inherited part of the GMP. Okay, so Yes. if you go for the GMP, you have to fulfill the criterias of the Pollution Board, that you are not there, that you are adding pollution in the environment which is already there much, and showing the concern. And certainly you are also follow the government rules regarding the labor law. And of course, because see, there are the certain conditions. If you are having more than this number of staff, then there must be a provisions and the registrations from the Provident Fund and many more things. So see, the minimum is here Schedule T and of the Okay, sir. GMP of the Drug Rule 1945. Yes, please. Okay, sir. My next question is,
What should be the area and setup to develop a pharmacy? Area and the setup. Area matlab surrounding area. Surrounding area. What should be the surrounding area? Yes, I need your explanation. Area means product area or the geographical area? Surrounding area, geographical Geographical area. area. See, nowadays in every city there is an industrial zone or a special economic zone. So it will be much better and you will get a license under the GMP if your land is there in the industrial zone or a special economic zone. And you will not get a GMP certification in the residential area as per law. But I have seen many pharmacies which are existing into the residential area. How they are getting the license and what is the system to get the license, better not to discuss about that. But if you are a new player, then follow it. Have acquisition of the land in industrial area of your city or the special economic zone, because there are a lot of benefits also. In the industrial zone, there is some subsidy on the electricity, or there is some subsidy in the special economic zone, and the many things government is giving you incentives when you are coming with a new setup in a very authorized way as per the norms of the government, as per the desires of the government, and you will be benefited. So this is the point where it is required. So geographical area should not be in the residential colony, as well as I said the pollution and the many more. Suppose you are starting the mercurial production like that, there is many things which are intermingled with each other. तो अगर आपको ये करना है तो आपको सीधे इंडस्ट्रियल एरिया में आप फिर आपको ये भी देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप आयुर्वेदिक फार्मेसी केमिकल पेंट बनाने वाली फैक्ट्री के बगल में ना खोलिए. आपको इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक सेफर लैंड लेनी होगी जहाँ पर कोई पॉल्यूटेंट इस तरीके से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी फैक्ट्री के आसपास ना हो. पता लगे आपकी फैक्ट्री की बाउंड्री मिल रही है केमिकल बनाने वाले एशियन पेंट से, तो आपकी दवाओं का तो कल्याण हो गया पूरा. So that our drug is not contaminated. फिर पता चलेगा कि शतावरी में लेड कहाँ से आया और ये सारे इश्यूज जो उठे थे वो शतावरी में लेड कहाँ से आया. तो यही आया था कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस पर शतावरी उगी थी और इसलिए वो शतावरी में लेड आया था. तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी जो आपकी फार्मेसी का आप सेटअप कर रहे हो आपका पड़ोसी कौन है. और पड़ोसी से मतलब कि ये नहीं कि जस्ट बगल वाला. पड़ोसी से मतलब ये है कि आपको 50-100 मीटर अगर देख सकें तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो कंटामिनेशन और एडल्ट्रेंट्स तो पास होने के लिए सॉइल मीडियम है, वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है. तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसको कि मेडिसिन कहते हैं और वो ह्यूमन लाइफ से डील करती है. Yes. तो फिर पता चलेगा कि आप तो एकदम बहुत बढ़िया प्रोक्योर करके और बहुत अच्छा ऑथेंटिक रॉ मटेरियल लाए हैं, लेकिन जब फाइनल जा रहा आपका प्रोडक्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में तो उसमें हर चीज़ जो आपके अनडिजायरेबल हैं वो ओवर द एस्टिमेट आ रहे हैं. Yes. वो परमिसेबल लिमिट में नहीं है. तो उसका रीज़न आप नहीं है, आपके बगल वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है जो उसने खोल रखा है अपनी फैक्ट्री. तो आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए. My next question is what are the instruments we must have to start a pharmacy? There is no flat answer of this question, Dr. Rasmi. Okay, sir. There is a comparative answer of this question. Instrument you need with your dosage form which you are coming in the market. Okay, sir. And anything if you are coming in the market in the beginning, students like you or the PG scholars like you will start with a syrup, you will start with a tablet, you will start with even the fine powder churn, or you may go to the Chyawanprash or the Avle. Then what is the product? Instrumentation is depending on that. If the product is dosage form is tablet, then you need a tablet making machine. If your product is an ointment, then you need an ointment filling machine. Yes. If your product is also a risk, then you need a lot of containers for
having the controlled temperature to facilitate the process of the fermentation. तो इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट ए जनरल फिनोमिना, ये होना ही चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है कि आपका उत्पाद क्या आ रहा है। अगर आपका उत्पाद फाइन पाउडर है तो आपको मिल्स चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्स चाहिए। आपका प्रोडक्ट मैंने बताया कि अगर टेबलेट है तो आपको फिर उसमें ये भी चाहिए कि जो टेबलेटिंग मशीन जो नई नई एडवांस आ रही हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन, यस, आपको ब्लिस्टर पैकिंग चाहिए अगर आप ब्लिस्टर के फॉर्म में आ रहे हैं या। तो ये डिपेंड करता है पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे ला रहे हो। और फिर वो तो मिनिमम का क्राइटेरिया है ही है, वो तो जीएमपी में दिया ही हुआ है कि आपको अगर चूर्ण बनाना है तो 100 स्क्वायर फीट और ये 2 मशीन। ओके सर। है नेक्स्ट। Next, I want to ask about the raw materials. From where we should use the procure our raw material. What are the basic things we should consider during procuring the raw material? Dr. Rasmi, this is the most important point what you are raising, the procuring of the raw material. And government is helping you to get a very quality standard Ayurvedic medicines. In the way they are authorizing vendors. Government is issuing certificate, yeah, you have to fulfill the schedule T1 from where you are procuring this. Certainly you have to forget the habit to go in the market. If you are in the Banaras, then the Gola Dinanath. Yes, and if you are in Delhi, then the Khari Bauri. In every city there is a market of jadi booty. Yes. Even in Dehradun, there is more market in the Dehradun about the jadi booty. So, and see, their cost is varying very much as per the assurance of the quality of the raw material. So, if you are coming into the field, go to the authentication process. And government is now trying on every angle to make assure the availability with an authentication process. Just today I read that now the SIM distributor of the different mobiles company, there is a need of police verification who are selling it. Yes. And also माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट है आज ही कि वो बल्क में जो लोग दे रहे थे सिम वो नहीं दे पाएंगे, अब उस पर राशनिंग हो रही है। तो ऐसा ही कुछ रॉ मटेरियल के लिए भी हो गया है। और आपकी सफलता एक निश्चित रूप से जान लीजिए, आपकी सफलता मतलब आपके प्रोडक्ट की सफलता डिपेंड करती है द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका अच्छा है, आपको रिजल्ट मिलेगा। और रॉ मटेरियल भी आपको वो सेल्फ लाइफ पीरियड वाले पॉइंट्स को याद रखिए, और वो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हों, गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस से कलेक्ट किए गए हों, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली वो रखा गया हो। ये तो गुड है ना। यस। तो 5 गुड हैं टोटल। ये 3 तो मैंने बताया, और एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये जब 5 का आप लेकर के कम्बिनेशन चलोगे तो आपकी निश्चित रूप से फार्मेसी के फील्ड में आपकी जय विजय होगी। क्योंकि फार्मेसी तो बहुत हैं, इतनी फार्मेसी हैं जो कि अब मैं इसी के लिए कुख्यात हूँ कि मैं सही सही बोल देता हूँ। तो इतने भी हैं जो कि कोई भी मोरल और एथिक्स नहीं फॉलो कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स में। उनको लाइसेंस मिला हुआ है और वो एक ही दवा को भरते हैं, सिरप को, और उसका लेबल अलग अलग होता है। तो ऐसे भी लोग हैं बाज़ार में। तो वो पिनल कोड को इनवाइट करते हैं और चेंजेस हो रहे हैं। अभी भारतीय न्याय संहिता आई है तो उसमें बात आती है कि थोड़ा लिखा जाए कि नहीं, इन सब चीज़ों को जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस किए जाएं। क्योंकि दे आर, आपको अब तो ये भी बदल रहा है, 302 307 ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे नंबर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो 420 का जो चलन था कि ये 420 है वो ख़त्म हो गया, वो 316 हो गया है।
अब परहैप्स ये 302, 307, 98, 99 हो रहा है, तो सारे नंबर भी बदल रहे हैं। तो हम लोगों को पूरा हर चीज़ को अपना एक सामान्य बोलचाल में जो हम लोग बोलते थे वो सब बदलना होगा। तो 302 में तो आप किसी ने एक आदमी को मारा, ठीक है, एक आदमी को प्रभावित किया। लेकिन जब आप खराब दवा बेच रहे हैं, स्पूरियस दवा बेच रहे हैं, एडल्ट्रेटेड दवा बना के बेच रहे हैं, जानबूझ के बेच रहे हैं, तो आप कितने लोगों को मार रहे हैं, आप कितने लोगों की फैमिली तबाह कर रहे हैं। तो आपके ऊपर माननीय सुषमा स्वराज जी थी स्वर्गीय, उन्होंने यही प्रपोज किया था कि इस तरीके की दवा बनाने वाले लोगों के ऊपर 302, 307 लगनी चाहिए। 307 का उन्होंने प्रपोजल दिया था, जो पार्लियामेंट ने नहीं माना। अलग अलग विचार होते हैं सबके, लेकिन उन्होंने ही सब चेंज कराए थे। नहीं तो पेनाल्टी तो 2,000 रुपये थी, यस सर। अब वो लाखों में पहुंची है, 50,000 हुई है। और अभी मतलब कैसे हम लोग लिबरल हो जाते हैं इन एलिमेंट्स के प्रति, वो मेरी समझ में नहीं आता। 1 लाख की पेनाल्टी दे करके अगर कोई 50 लाख का बिजनेस कर ले तो क्या महसूस करेगा वो। और अभी जो गवर्नमेंट ने ले आए हैं ड्रग एक्ट में जो सुधार, तो उसमें प्रिजन तो ख़त्म ही कर दिया है, इम्प्रिजमेंट तो ख़त्म ही कर दिया है। अब आप अगर स्पूरियस ड्रग बनाते हैं तो आप जेल में नहीं जाएंगे, जबकि जेल में जाना ही सबसे बड़ा कष्ट का काम होता है। फाइन तो इंडस्ट्रीज से भर ही देगा, लेकिन आप अब उसको जेल में नहीं डालेंगे। तो इस तरीके के जो सुधार हो रहे हैं, वो सुधार कितना सुधार हैं और कितना दबाव बनाएंगे कि स्पूरियस ड्रग का उत्पादन न हो। क्योंकि जो आदमी इस बिजनेस में है उसके लिए 1 लाख 2 लाख कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने रखता है कहता है वो जो जेल में 6 महीना रहेगा, वो जो 1 साल जेल में रहेगा वो। लेकिन वो गवर्नमेंट हटा रही है अब, है ना। तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो भाई देखिए, गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो उसके लिए जो पब्लिक डोमेन में आती है, कोई भी नोटिफिकेशन गजट का 30 डेज़ के लिए डिमांड में, उसके पहले बड़ा होमवर्क हुआ रहता है। चाहे वो NCISM करे तो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करे तो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करे तो, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री करे, उसके पहले वो लोग 5-6 महीने का होमवर्क करते हैं। और उस 5-6 महीने के पीरियड में खूब लॉबिंग होती है, ये आप जान लीजिए। यस सर। जो आप लोग अभी पब्लिक में समझते ही नहीं हैं कि ये जो चेंज हुआ वो अचानक एक वहाँ पर डीलिंग असिस्टेंट बैठ करके या एक डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं कर दिया। इसके पीछे एक इम्प्रेजमेंट ना हो, उसके लिए खूब लॉबिंग हुई होगी। कोई भी अगर गजट आता है तो उसके पहले ये लॉबियस्ट काम करते हैं। कोई डिफेंस डील होती है उसमें लॉबियस्ट काम करते हैं। तो और तब वो पब्लिक के सामने आता है, और पब्लिक इतनी हमारी भावुक होती है कि वो समझती है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो ट्रू सेंस है वो लॉबिंग है। वो लॉबिंग हटवाती है, बढ़ाती है, घटाती है, और फिर आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो सुनी नहीं जाती है। आई एम सॉरी टू से इट कि अगर आपने कहा कि नहीं वहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुनी नहीं जाएगी। आप लिख के देख लो, वो फिर वैसे ही पास होगा कि इम्प्लीमेंट हटाया जा रहा है, प्रमोट कर रहे हैं। अरे किसी की जान लेने के लिए प्रमोट कर रहे हो कि उसका बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिजनेस या लाइफ? ऑलवेज लाइफ। चलो गुड। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप लोग जब जाओगे फार्मेसी में, आपकी पीढ़ी जब जाएगी फार्मेसी में, तो ये सब जो एक शब्द कह दूँ कि फार्मेसी के नाम पर जो मैं फिर से उस टॉप 100 को हटा देता हूँ, वो बहुत बिजनेस अपना एथिकल और मोरल में कर रहे हैं। लेकिन टॉप 100 के बाद जो आपको हज़ारों हज़ार संख्या है फार्मेसीज की, नो, आई हैव रिजर्वेशंस अबाउट देम। ठीक, और वही हमारी मार्केट ख़राब करते हैं, वही आयुर्वेद की मार्केट ख़राब करते हैं। yes. और वही आयुर्वेद के नाम को बदनाम करते हैं। फिर ये होता है कि मैंने पूछा कि भाई वो कैसे ठीक हो रहे हैं, तो पता चलता है कि वो साथ में कुछ एलोपैथी ड्रग्स भी लिख देते हैं इंटीग्रेटेड। तो एलोपैथिक ड्रग अपना काम कर देती है, इसलिए आयुर्वेदिक ड्रग की भी जय जय हो रही है। तो जितने भी ये स्पूरियस वाले हैं मैन्युफैक्चरर्स, आप देखिए तो उनके साथ एक अच्छी एलोपैथिक ड्रग जाएगी। और जितने भी ये क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स हैं, नाम ले सकता हूँ मैं, आपका डाबर हो सकता है, आयुर्वेद वैद्यशाला कोटकल है, आपके श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड है, चरक है, ये जो टॉप प्लेयर्स हैं, सांडू है। yes.
तो ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये लोग इथिकल और विथ मोरल ये लोग काम करते हैं। इनके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, सबको बिजनेस के लिए है, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑन द कास्ट ऑफ ए लाइफ। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो 100 को छोड़ करके जो नीचे आता हूँ, जो हज़ारों हज़ार हैं, उनके लिए सिर्फ पैसा है और उनके लिए व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है। और इसमें उससे ज़्यादा दोष फिजिशियंस का है जो उनकी दवाओं को लिखते हैं, और वही फिजिशियन उनकी दवा भी लिखते हैं और साथ में एक एलोपैथिक मेडिसिन लिख देते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन अपना काम कर देती है, वो ठीक हो जाते हैं, जय उसका भी चल रहा है। लेकिन आप ये जो टॉप 100 वाले हैं, आप एलोपैथी न दीजिए, खाली उनसे भी आप अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये Yes, of course. मेजर डिफरेंस है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट ओवर। हाँ, आपके और जो आप क्वेश्चंस बता रही थी कि कॉपीराइट और ट्रेड, ये सब अब ये अगले सेशन में लेंगे और आपका अगला नंबर नवंबर फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि Okay, फ्रेंड्स इतना स्टूडेंट्स उत्साहित हैं, इतने को लर्नर्स उत्साहित हैं अपने अपने क्वेश्चंस के साथ, और इन्होंने तो अपना जीवन का उद्देश्य ही रखा है डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने कि ये एक फार्मेसी खोलेंगी। इन्होंने एक नाम भी सोच रखा है, मैं अभी यहाँ बताऊँगा नहीं क्योंकि अभी इनका क्वेश्चन था उस पर कि सर कॉपीराइट क्या होता है। तो ये जा रही हैं इसको देखने, और अपने वो जो फार्मेसी का इन्होंने नाम सोच रखा है उसको कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन कराने। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि Thank आपकी you so much, फार्मेसी बहुत अच्छे से आए। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में नवंबर फर्स्ट वीक में आपसे फिर लेंगे और फिर बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है, आप या और क्या चाहते हैं, इस विषय पर अपने सुझाव लगातार देते रहिए हम लोगों को, हम लोग हमेशा स्वागत करेंगे। और सितंबर माह की जो इंटरव्यू सीरीज़ हो रही है वो टोटल पोषण माह होता है, सितंबर टोटल आहार पे हो रही है, और उसको मिस मत करिएगा। उसमें आपको बहुत सारे कोर ब्रांचेज जो कि एमएससी होम साइंस से हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से हैं, वो लोग आपके साथ होंगे और एक अच्छा सेशन सितंबर में जाएगा। आई होप सो। थैंक यू डॉक्टर रश्मि, एंड थैंक यू ऑल Thank you so much, sir. for your very nice patience and the encouragement. Thank you. Thank you. Thank you. Please like, share, and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Thank you, viewers of Assertive Ayurveda. Thank you. ठीक, थैंक यू। ये इन लोगों का है, लेकिन चलिए मैं भी शामिल हूँ इसमें, अब मेरी भी रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।